अब हो रही है। Thank you. So let's start. Suppose you have n plus 1 data point x0, y0, x1, y1, x2, y2, okay, xn, yn. How many data points are here? N plus 1. n plus 1. Okay, n plus 1 data points. Okay, so if we are computing interpolating polynomial that is passing through these n plus 1 data points, let us suppose px and qx are two polynomials that we are constructing by two different techniques. Maybe one px we are computing by Lagrange and qx we are computing by Newton divided difference, and we want to show these are not different, these are same. Okay, so we want to show here uniqueness of the interpolating polynomial that we are constructing by two different approach. So by the property of interpolating polynomial, we can write pxi equal to fxi, है ना? जो भी आप interpolating polynomial compute करते हैं, वो polynomial at the data point is equivalent to the function value. I should write it is equal to yi. Yi fxi are same. Okay, fx0. We can write it like that. So fxi and yi are same here. So that's why pxi equal to yi at xi. At xi, polynomial value is equivalent to yi or fxi. You can choose anything. Okay, so this is same for all values of I, that is 0, 1, 2, n, or I should say px0 equal to fx0, px1 equal to fx1. Same thing is for q, qx0 equal to fx0, qx1 equal to fx1. For all data points, this condition is satisfied by the property of interpolating polynomial. Property of interpolating polynomial. Yeah. Polynomial. Then what is the degree of px and qx? The degree of the px and qx is at most n, है ना? n plus 1 data point है तो maximum px और qx की जो होगी वो n होगी, है ना? Then we can write the difference of p and q like that, px minus qx as ix. Okay, then px and qx are having same value at the xi data points, so ixi will be what? Ixi will be pxi minus qxi, pxi equal to fxi, qxi equal to fxi, so the value is coming out to be 0. So ixi is 0 at x I equal to 0, 1, 2 and n, है ना? ये condition satisfy होगा. So what does it basically? Pardon? बेसिकली प्रैक्टिकल प्रूफ ही है मैम, ये मतलब वैल्यूज निकाल के देखिए और फिर माइनस करके देख लिया. हाँ, ठीक है. तो आपका i जो है वो कितने पॉइंट्स पर 0 है? I is 0 plus 1. हाँ, 0 at n plus 1. But I है क्या? I is the difference of px and qx, और p और q का डिग्री कितना है? n डिग्री. p और q का डिग्री कितना है? एटमोस्ट n डिग्री. तो ix का n से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए. नो मैम, है ना? बट जस्ट गो टू द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनोमियल. अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, सपोज यू आर हैविंग, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है. जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है. जीरो डिग्री डिफाइन नहीं होती, बट सपोज वी आर हैविंग ए पॉलिनोमियल x minus x0, x minus x1, है ना? तो p x0 will be what? 0. p x1 is also 0. Okay, so p is 0 at जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 किस किस पॉइंट पर होगी? जो भी इसके रूट्स होंगे उन्हीं पर 0 होगी. ठीक है, p 0 at x0 and x1. तो इसका मैक्सिमम जो पावर इसका जो मैक्सिमम डिग्री होगा px का वो कितना होगा? 2 होगा. 2 होएगा. हाँ, तो अगर i आपका जो है वो n plus 1 पॉइंट पर 0 है तो मैक्सिमम डिग्री i का कितना होना चाहिए? n plus 1 होना चाहिए. ओके, बट यहां से हम क्या कहेंगे कि i का जो डिग्री है वो क्या है? एटमोस्ट n होना चाहिए. ओके, तो हम n होएगा. n plus 1 कैसे होगा? n plus 1 कैसे हुआ? क्योंकि i जो है वो कितने पॉइंट पर 0 है? x0 पर, x1 पर, x2 पर, xn पर 0 है ना? n plus 1 पॉइंट्स पर 0 है ना? यस. कोई भी पॉलिनोमियल जितने पॉइंट पर 0 होते हैं उतना तो उसका डिग्री होगा ही होगा ना? ठीक है मैम, ठीक है. So ixi is equal to 0 at n plus 1 data point, since the degree of ix can be at most n.
क्यों हो सकता है? क्योंकि p और q का डिग्री जो है वो n है, तो i का डिग्री भी n से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग n plus 1 zeros, तो इसका डिग्री n plus 1 होगा, है ना? दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n zeros. If it is not, then zero polynomial is only possible. ठीक है, तो i का जो डिग्री है यहां से रिप्रेजेंट होता है कि इसका n plus 1 होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई i is nothing, it is zero. हम बेसिकली हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि एक जगह से n+1 डिग्री आ रही है, एक से n डिग्री आ रही है, तो हमने यहाँ से कह दिया कि जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि कोई और हो नहीं सकता, कोई और हो नहीं सकता, इसलिए हम कह रहे हैं कि ix is 0 at n plus 1 डेटा पॉइंट, सो ix must be 0, लाइक n plus 1 तो हो नहीं सकता, तो इट मस्ट बी ए जीरो पॉलिनोमियल. अब जीरो पॉलिनोमियल होगा तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब लाइक यू आर पुटिंग एनी वैल्यू, इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो. जीरो पॉलिनोमियल दैट मींस जीरो. ओके, यस. गुड मॉर्निंग मैम. मैम एक्चुअली देयर इज वन रिक्वेस्ट. मैम आप एक टॉपिक कंप्लीट करके फिर डाउट्स ले लेना प्लीज. एक्चुअली ये डाउट ही है, मैंने अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, दिस इज डाउट ओनली, लास्ट क्लास डाउट है ना. अभी टॉपिक मैम दैट आई एग्री टू यू, बट मैम स्टिल मैम आप एक बार ही सबको म्यूट कर दीजिए, और जब बहुत ही ज्यादा कोई अर्जेंट डाउट हो तो उस टाइम आप अनम्यूट कर दीजिए. This is only doubt, that's why I'm discussing, otherwise next topic I'm going to start. Okay, so this is the reason how we can, so ix is coming out to be 0, it is a zero polynomial, that's why we can write p and q, they are not different, they are same from here, like, so ix is what? That is a zero polynomial. This implies that px and qx are not different, so px equal to qx. So we can say there exists only a unique polynomial passing through n plus 1 data points. Okay, so this is the thing that I wanted to discuss. Otherwise, you can, if you want to do it numerically, so you can find out a polynomial by two for the same data point, compute polynomial by the Lagrange method and Newton divided difference, and then write it in a proper form, you will get a unique polynomial. Okay, so excuse me मैम, मैं वैसे बेसिकली किसी को, मतलब किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं हो रहा था, मतलब मेरा बस यही था कि हम अगर डिस्कस कर लेते हैं ना तो बाकियों का भी, जिनका किसी का डाउट होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है, इसीलिए मतलब मैं डिस्कस कर लेता हूँ बीच में, नहीं तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करता, मतलब क्योंकि अगर डाउट पूछ भी लिया तो मैं किसी को कम तो नहीं कुछ आ रहा ना, मतलब समझ एटलीस्ट, मतलब ये मेरा पॉइंट बट अगर आप अगर हम मैम ऑफलाइन क्लासेस में होते. एक मिनट, ठीक है, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में जैसे ही टॉपिक खत्म होता है देन आई विल आस्क क्वेश्चन, उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई वैसे भी मैम अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तब भी तो मैम एंड में ही डाउट्स लिए जाते हैं ना मैम. और मैम एक और रिक्वेस्ट है मैम, अगर किसी को डाउट है तो मैम चाहे वो पूरी क्लास पूछे, लेकिन समझा रहे हैं तो उस टाइम मैम समझने दे आपकी बात, मैम लोग अपनी बात बताते हैं. यस मैम यही प्रॉब्लम है मैम. ऐसे तो मैम बिल्कुल जो आपकी बात भी समझ नहीं आती मैम, जो समझाना चाह रहे हैं उनकी भी नहीं आती. ठीक है, चलो मैं अभी सबको म्यूट करती हूँ. थैंक यू मैम. Okay, so next topic is what? Curve fitting, and in this topic we are discussing least square method. Okay, what is least square method? Least square method is basically to compute like not to say compute, actually if some data points are given, let us explain with the help of some example, then we can understand this thing. Suppose some data points are given to you, okay, like that, some data points. Okay, suppose this point is what? Maybe this is x1 y1, this point, this is x2 y2, okay, x3 y3, this is suppose x4 y4, like that, x3 y3 and so on. Okay, there are different points, data point we are getting, and like in interpolation what we did, with the help of these data point we compute a polynomial, and then we can say something about what kind of function is there. But in curve fitting what we do, curve fitting, we will check what kind of data is given and we will try to fit a curve that is not exactly passing through the data,
but it is having minimum error. Like this, these data points are available. So what we do, we will try to fit a straight line or a curve. It depends what kind of data is given to you. So this data is given like that, then we can say like there may exist a straight line. This is one straight line. We can find out one more straight line. This is another straight line. Also, we can compute a straight line 3. But out of these, some more straight line can be constructed through these data. Some point will be covered, some point will not be covered, but we will try to fit a straight line that is passing, not exactly passing through these data, but some of the most of the point will be covered in that data. Then we'll say we will try to fit a curve that is passing through the data and some point will not be covered in this data. So out of these 4 lines, which is the line that is best fit through this data, that will consider. Okay, so in curve fitting, what we do, we will try to fit a straight line or any other curve that will pass through these data point, and some of the data point may not be covered in this curve fitting. Okay, how to do that? Let us explain it with the help of this example. Suppose these are the data point are given to you. One point is here, another point is here. Okay, there are lot many data points are given to you. Okay, some more point will be given. So what we do, we will try to fit a straight line that will say best fit. Okay. After that, what we do, we will try to find out the difference between the data point and the point on the straight line. So this is your straight line. Okay. So what is the equation of this straight line? Suppose this fx is the equation of this straight line. Okay. After that, what we do, we will try to find out error between the data point and the point lying on this straight line. So this is fx straight line and this is the data point. Suppose this is the data point. Suppose the point is A. Okay. The coordinate of the point A is what? X1, Y1. Y1 is the dependent variable. X1 is the independent variable. So what we do, we will try to find out error between A and the point lying on the curve. This is E1. Error between this data point and the straight line that is passing. That straight line is trying to cover point lying on the region. Okay, so E2 is what? That is the difference between the point lying on the straight line and Y2 point. That is the data point. E3 is what? The difference this. So what we do in this method, curve fitting and least square method. Least square is what? We will try to find out the difference between the error. Error kaun sa hai? Point lying on the straight line and data point. Okay, so what we do, E1 will be what? E1 is the error between the point lying on the straight line and Y1, that is data point. Okay, E2 is the error difference Y2 minus fx2. Okay, x2 is this point. Like I should say this is the x2 point. Okay, function value at x2 and dependent variable y2. So this xi yi are known to us. जैसे कि हमें interpolation में हमको xi yi given थे. Okay, and fx is what? That is the straight line that we are computing. That we can take as a plus bx. Okay, a plus bx. Or if we are putting some particular point, then it will be a plus bxi, and we'll say function value fxi. ठीक है, तो fxi equal to what? A plus bxi. Okay, so E1 is what? Error at the data point x1, that is y1 is the observed value, or y1 is the given value, or that is given in the data point. Fx1 is what? That is the point lying on the straight line. E2, y2 minus fx2, ei, yi minus fxi. So suppose 10 data points are available. So you are getting 10 error, E1, E2, E3, En. After that, what you will do, you will find out the sum of the square. Like E1 is one error, E2 is another error. So what we do, we will find out E1 square, E2 square, E3 square, and En square. Why we are showing, why we are doing square, I will explain. Actually, what is our aim? I told you in this example, from the given data, we can construct
lot many lines, but we are interested in that line that will give you less error. ओके तो हम किस में इंटरेस्टेड है, हमारी जो ये एरर है वो कम आना चाहिए, बट डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग डिफरेंट एरर, E1 E2 E3 En डिफरेंट एरर. सो व्हाट यू वांट टू मिनिमाइज दीज एरर्स. तो हमारा बेस्ट फिट क्या होगा, जिसमें कि आपका सबसे कम एरर आएगा. ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी विल राइट एरर एज E1 स्क्वायर फर्स्ट एरर प्लस सेकंड एरर स्क्वायर, थर्ड एरर स्क्वायर एंड सो ऑन. Now you can ask why we are doing this square. देखिए, some point are lying on the one side, some point is lying on one side of the straight line, and some point are lying on other side of the straight line. तो कुछ point जो होंगे अगर हम ये निकालते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है. So if you write the sum of the error, some is negative, E3 and so on. Okay, En. There are different errors. Some values may be negative and some values are positive. So error get cancelled. If we are doing square, then error are small, that's why square will be more small. So क्या होगा कि आपकी error जो कि वो sum हो जाएगी, it will not get cancelled. Okay, after that we are writing capital E. Capital E means what? Square sum, error square sum. So it is what? E1 square plus E2 square plus E3 square. So our aim is what? Our aim is to minimize these errors. Okay, so what we want to construct a curve, or we want to fit a curve that will minimize error. So that's why this method is called least square error. So our aim is to minimize this error. Okay, minimize this error E. So E is what? That is summation of EI square. Okay, so error is what? A straight line that we are computing, or we are constructing a straight line with the help of the data. Okay, and there we will try to minimize error. So error is what? Y1 minus fx1. This is the given value, data point से value जो आई है वो y1 है, fx1 is what? Value at the straight line. Okay, so how to minimize error? You know how to minimize error? It's where, like आपको पता है maximum और minimum कैसे निकालते हैं. We will use that concept. So minimize the sum of the square of the error. So I told you EI is what? E1 is what? That is y1 minus fx1 square. So EI will be what? Yi minus fxi. I told you fx is what? That is the straight line we are fitting. So what would be the general equation of the straight line? A plus bxi. Okay, so that's why we are writing summation yi minus fxi square equal to summation of yi minus fxi square. What is fxi? Fxi we are taking as a plus bxi. So we can write it E equal to summation I equal to 1 to n yi minus a plus bxi square. Okay, now in order to minimize this error, capital is what? Square of the errors, है ना? Summation of the square of the error, as we have written here. So in order to minimize error, what we require? We require best equation of the straight line. This straight line equation is depending on the parameter a and b, because xi are fixed. Only a and b will change accordingly. You will get different straight line. So we want a straight line that will minimize this error. Okay, so that's why we are interested to take those values of a and b which will be optimal. So that's why we are computing del E over del A. Here a and b are the parameter. Okay, so del E over del A equal to 0, del E over del B equal to 0. Now del E over del equal to 0 equal to what? Del E over del A, what is coming out to be 2 summation yi minus a plus b xi. We are differentiating it with respect to a. Okay, so 2 into this is I equal to 1 to n or 0 to n, depend on data point. What data point I have taken? I have taken from x1, so that's why I equal to 1 to n. And then differentiation of this, it is coming out to be minus 1. It is taken as 0. What is coming out to be? From here, summation yi minus summation a plus bxi. Okay, equal to 0. From here, it is minus sign, so minus sign we can take with 0, so it will not make any difference. So we are taking this equation as summation yi equal to summation of a plus summation b we can take outside xi. Okay, so I is from 1 to n, I is from 1 to n,
I equal to 1 to n. This is equation number 1. Now we are differentiating this equation with respect to b. So what we are getting, del E over del v equal to, now differentiation of this. Okay. 2 of summation yi minus a plus b xi. Okay, differentiation of this function with respect to xi. So it is coming out to be b, differentiation of b is 1. It is xi equal to 0. Okay. 0. So what is coming out to be, this 2 will take minus xi. Okay. So it is coming out to be summation of yi minus a plus b xi into xi. We are taking minus sign and 2 with 0. It's coming out to be 0. Summation yi xi equal to summation a xi plus b xi square. I equal to 1 to n, I equal to 1 to n, also I equal to 1 to n. Okay, so this is the equation number 2. Okay, let's go back and then check. This is the equation number 1, and summation of yi I equal to 1 to n, summation of a plus summation bi xi. I'm writing on the next page only. This is equation number 1, and summation yi I equal to 1 to n equal to summation of a I equal to 1 to n plus summation of b xi I equal to 1 to n. This is equation number 1. We are writing as 3. Okay, one more thing. If you are adding a n time, so what you are getting? You are getting this term as na. Okay, so this term we can write it as na. So I'm replacing it. This na. Now solving for a and b. आप यहाँ से a and b की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं. Okay, a and b, after computing the value of a and b, you will get the equation of the straight line that is passing, that is the best fit for the given data. Okay, just keep in mind this straight line will not pass through all the points because you are getting error na here. This straight line is not passing through all these points, but this is the best fit through this data. Okay, so this is important thing that you should understand. Okay, now anybody have doubt, then ask. I think Dhruv, you can ask. Dhruv, you can ask question. What yes ma'am, yes. मैम बेसिकली हमने जो आपने ग्राफ बनाया था उसमें एक लाइन बनाई थी, डॉट्स बनाए थे, तो उसमें मैम बेसिकली जो हमारा y है वो तो हमें गिवन ही है, जो में y1 y2 और वो सारे वो तो गिवन ही है. तो मैम उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो x के कॉरेस्पॉन्डिंगली फंक्शन के ऊपर आएगा पॉइंट, मैम वो तो ऊपर नहीं आएगा. आपने मतलब लाइन परपेंडिकुलर बनाई है, जैसे E2 की लाइन आपने परपेंडिकुलर बनाई है, वो यहाँ पर आपको वो x2 के सीधी नहीं आने, मतलब ऊपर को. यस, ऐसे ही आएगी बिकॉज ये पॉइंट लाइक जो भी आपका पॉइंट है. नहीं मैम, मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे कि हम x2 वाला जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट नीचे जो है, हम वहां से ऊपर लेके लाइन पे इंटरसेक्ट करा दें हम, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट बना होगा, पॉइंट सपोज दिस इज द पॉइंट x2, ठीक है, ये आपका पॉइंट x2 और y2 गिवन है. यस मैम, ठीक है. और जो पॉइंट हमारा x2 है, इस पर फंक्शन की वैल्यू कितना है? हाँ, ऊपर ले जाओ मैम इसको. हाँ, स्ट्रेट लाइन. यस मैम, ये कह रहा था मैं. तो ये आपका y2, मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं आ रहा ना वो, मतलब नहीं है, बट वो सिर्फ लिखने के लिए है, बट एक्चुअली दिस पॉइंट इज व्हाट, x3 इज दिस पॉइंट. समझ गया मैम, ठीक है. और हम थोड़ा सा एक दो और थे बस. हाँ पूछिए मैम. हम मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं स्क्वायर की जगह. आपने स्क्वायर यूज किया तो मॉडुलस यूज कर सकते हैं. मिनिमम कैसे निकालेंगे ना, मॉडुलस को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना. ओहो,
ठीक That है, is the- ठीक है। मुझे एक्चुअली ये पॉइंट और बोलना मैम था, मैं भूल गई बोलना, है ना? ये और मैम यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। यस मैम बेसिकली मिनिमाइज करने के लिए डेल ई बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 नहीं करते? यहाँ पे हमने ए और बी कांस्टेंट्स को आपको चाहिए डिफरेंशिएट क्या? करके 0 नहीं, किया। एक्स आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वो स्ट्रेट लाइन जो कि, एक मिनट, जो बेस्ट फिट होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन किस पे डिपेंड करेगी? ए और बी पे डिपेंड करेगी ना। y equal यस to मैम, a plus x. That's why we want those values of like a and b for by which we are getting a best straight line, है ना? तो a और b इसीलिए हम कर रहे हैं। Any other अच्छा question? वो एक्स तो गिवन ही है। हाँ, है ना? x I points are given. x जो है आपका स्लोप किस पे डिपेंड करता है? b और a पे ही डिपेंड करेगा ना? समझ गया, हम समझ गया। तो मैम एक कैलकुलेशन एरर लग रहा था मेरे को बीच में ना, आगे करना। नहीं मैम, वो जो लास्ट में आपने कराया था। यस मैम, यहाँ पे मैम यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? वो टॉप पे जो लिखा हुआ है आपने, यहाँ पे यहाँ पे माइनस एक्स आई है और बाहर माइनस है। पूरा बाहर है ना? आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो? You are differentiating this whole thing. डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा? 2 into yi minus a plus bxi, है ना, into minus xi। ये है पूरा समेशन के अंदर। माइनस साइन तो पूरा बाहर है ना इस पैकेट के। और चलो मैम, ये देख लेता हूँ मैं ये एक आप बारी। देख लीजिए, ठीक है ना? ठीक है। 2 into, just assume this is a capital X, 2 into capital X and then differentiation of this term, है ना? ओके, इसको चेक कर लेना, ये ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो सॉल्विंग फॉर ए एंड बी, you can get the best line। आपको इक्वेशन, you can get the equation of the straight line, that is a plus bx। now let's do one example। कितना टाइम है? ओके, इसके अलावा किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। so that एक्सक्यूज मी मैम। yes, मैम आपने जो कर्व फिटिंग का फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, हाँ वो हाँ, कर्व दोबारा शो कर दो प्लीज। ये मैम मैम इससे पहले वाली स्लाइड। ओके, सबसे पहले है ना वो एक्चुअली यस। जस्ट अब हमने जो भी लिखा है ना, अब समझ पाएंगे कि क्या किया है। लिस्ट स्क्वायर मेथड इज ए कंप्यूटेशनल टेक्निक फॉर फिटिंग एन इक्वेशन टू ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने स्ट्रेट लाइन फिट की। वी कैन आल्सो फिट एनी अदर कर्व, मे बी लाइक पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और एनी फंक्शन, हम कुछ भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम इसके बाद में करते हैं। अभी एक एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का करते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है? द क्राइटेरिया ऑफ द बेस्ट फिट इज दैट sum of the squares of the differences of the observed data point, जो भी हमने लिखा है ei में, है ना, yi minus summation of yi minus fxi whole square. This is the one. What is our goal? Is to find out the parameter value for the model which best fit the data. So that we are doing. Okay. Now let's do one example. I will provide you notes for this. कर्व यहाँ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये तो हम अज्यूम करके ही चले हैं। तो हमें भी न्यूमेरिकल्स हमारे कोर्स में करने होंगे, उसमें हमेशा ही कर्व को स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके सॉल्व करना आपको होगा। दिया जाएगा आपको क्या फिट करना है। अभी हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए कर रहे हैं। इसके बाद में मैं अभी पैराबोला के लिए भी करती हूँ, है ना। लेट्स डू वन एग्जांपल। इसके बाद में हम और भी फंक्शंस के लिए करेंगे, है ना। बट जो आपको दिया जाए, जो भी आपको करना होगा वो आपको दिया जाएगा। obtain least square straight line fit square straight line fit to the given data x। आपको डेटा गिवन है x and y as 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1, and function value at the data point are given as 0.447, 0.632, 0.775, 0.894 and 1. Okay, now if we go back to the equation, what equation we are getting? Equation number 2 is what? Equation number 1 and equation number 2. So
this equation is summation of yi equal to na plus b summation of xi. What is n? N is the number of data points. Okay, so summation of yi equal to summation of, sorry, na plus summation of xi yi. Okay, second equation we are getting as xi yi equal to summation of a xi plus summation yi xi square. It's very easy to keep remember. Just keep remember like that. Summation of yi equal to how many data points are given, and a plus summation xi yi. Okay, for the second equation, what you have to do, you have to multiply in this equation by xi. So summation xi yi plus, now you are not having constant value, so you have to write here summation xi because you are multiplying by xi, plus summation same value, multiply it by xi. So summation yi xi square. Okay, अगर आप फार्मूला याद करेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट इट्स इजी टू कीप रिमेंबर. नाउ कंप्यूट समेशन xi. समेशन xi आपका क्या होगा? Now add all these values. So it is coming out to be 3. Summation of yi means what? Sum of all these values. So it is coming out to be 3.748. Okay. Next value is what? Next you have to compute as xi square. Okay, because xi square is required. Sorry, xi square is not, this xi square is required and xi. So what we can do, xi square means what? 0.04, 0.16, 36, 64 and 1. Okay, and then what? Yi x square. So yi x square, yi x I square. So multiplication of this value and this value. Okay, so that you can compute from here. And also before that, what are the values that we required? yi xi and then yi xi square. So yi xi is what? 0.2 into 0.447, whatever the value is coming out to be, 0.4 into 0.63 to 0.6 into 0.775, 0.8 into 0.894, that you can compute by yourself. I'm just writing the sum. So summation of xi yi is coming out to be 2.5224, and summation of xi square, summation of xi square, it is coming out to be 2.2. Okay, and summation of xi square yi, just a minute, yi 3 xi square, just a minute, I have to check. Yeah. What are the equation? Na b summation xi, and this is xi yi. Actually मैंने शायद वहाँ पे एक छोटा सा mistake किया है. Not, this value is not here. This is also not here. है ना? मैंने थोड़ा actually वो parabolic का मैंने लिख दिया. Equation we are getting this ना, summation of yi equal to na plus b xi. So summation yi na plus summation of xi, and then you multiply it by xi. So you are getting xi yi plus a summation of xi plus summation xi square. ना? तो हमको ये टर्म इसमें नहीं चाहिए होगी, वो दूसरे एग्जांपल्स में चाहिए होगी. That I didn't compute it. हाँ, बस यहाँ तक हमको चाहिए होगा. Now put all these values. Summation of yi is what? This value. This value. Na is 5. So I'm writing finally the equations. You can check it later on. So 3.748 equal to 5a. There are this 5a means what? 5 is this value n plus 3b. This 3 is what? Summation of xi that we computed, and this is summation of yi. Okay, this is 2.5224 equal to 3a. This 3a is what? Summation of xi plus 2.2b. So this 2.2 is what? This summation of xi square. This is summation of xi square. Okay, solving this equation, we can get the value of a and b. A is coming out to be 0.3392, and the value of b is coming out to be 0.684. And the equation of the line is coming out to be a plus bx.
Okay, so this is the best fit equation that is like for the given data. Okay, and error we can also compute, that is what? Summation yi minus a plus bxi whole square. Okay, I equal to 1 to n. That means y1 minus this equation a or b आपको given है, that you can compute, that is coming out to be 0.0245. You can compute it by yourself. So this is what? This is the equation of the straight line by least square method. Okay. Let's do it quickly for the parabola. Yes, true. Ask. What is the what you want to? आपने पीछे बी ने लिखा था मैम पिछली स्लाइड में ना, इससे पिछली, यहाँ नीचे बी एक्स आई और वो आएगा। Yes. और मैम इसमें ये तरीका क्या, मतलब याद हो जाए, मतलब है देखिए, आपको पता है याद करने का तरीका क्या करते हैं? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है इक्वेशन में. जस्ट राइट y I summation this. Okay, and write it like that. So this is your first equation. Okay, everywhere you have to write I equal to 1 to 1. है ना? आपको पता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है? यहाँ पे आपको yi का मतलब क्या है, जो भी हम कंप्यूट कर रहे हैं. दूसरा आपके पास yi का मतलब क्या है, जो भी हमें गिवन है. ओके, नाउ मल्टीप्लाई it, multiply y xi. So you are getting summation of second equation xi yi. Okay, here you are multiplying by xi, so a we can take outside, b summation of xi square. This is equation number 2. It's very easy to keep remember. Equal to 1 to 1. अदरवाइज आप अगर बुक में देखेंगे तो उसमें पूरा फार्मूला लिखा हुआ है ए और बी का, तो आई विल से नॉट टू remember that formula because it may create confusion. So it's better to understand what we are doing. Okay, proof is not important, but you should understand how we are getting these values. Okay, how much time is there? Actually 2 minutes. So let's do for the parabola. We can fit a parabola. Same procedure is there. You are having simple different data point. So what we can do, we can try to find out a polynomial, second degree polynomial passing through this data. Okay, so how we can do that? Procedure is same. Capital E, summation of ei square I equal to 1 to n, that is summation of yi minus, what is the general equation of the parabola? General equation parabola के क्या होती है? a plus bx plus cx square. Okay, second degree polynomial a plus bx plus cx square. Okay, cx square. Okay, xi square. Okay, square. This is your error square. Now to minimize error, we can compute del E over del A. Same procedure. There are 3 parameters. Okay, so we can compute the derivative. Del E over del A means what? Del E over del A equal to 0 equal to 2 summation yi minus a plus bxi plus cxi square into differentiation of this with respect to a. So it is coming out to be minus 1, 0. So just you can write it summation of yi equal to summation a plus summation bxi plus cxi square. Okay, this is equation number 1. Similarly, you can obtain the value for equal to 1 to 1
from del E over del V, when you will write del E over del V equal to 0, you are getting from there del E over del V. That means 2 into yi minus a plus bxi plus cxi square, and the differentiation with respect to b will give you what? Minus xi, as we have done in the previous case. So summation yi minus a plus bxi plus cxi square into differentiation with respect to b, so minus xi. Okay, it is coming out to be this. So formula is what? Xi yi equal to a summation of xi plus, so अगर आपका जो पहला इक्वेशन आया उसमें बस xi से मल्टीप्लाई कर दीजिए. Okay, b summation of xi square plus c summation of xi cube. Similarly, you can compute del E over del c equal to 0. You are getting what? I am writing final equation, that is xi square yi equal to a summation of xi square, just multiply by xi square, b summation of xi cube plus c summation of xi 4. Okay, so this is your equation number 2. This is equation number 3. Now you are having 3 equations in A, B, and C. Solve equation 1, 2, and 3. Get the value of, get A, B, and C. Put into the formula, you will get best fit as A plus Bx plus Cx square. So this is the best fit second degree polynomial, that is for the data xi, yi, I equal to 1 to 1. Okay, so you can do it like that. Example we will do in the next class. I will send you notes of this topic. Now anybody have doubt, then discuss, otherwise it's over. ठीक है, मतलब लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग, लाइक हम लोग ना क्लास में पहले टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, है ना, जिसको भी जो भी डाउट है. अदरवाइज हम 5 मिनट्स पहले ही हम क्लास खत्म कर देंगे, जब भी जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, है ना. डिस्कशन इज रियली इंपॉर्टेंट. बीच में वैसे डिस्टर्ब तो होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, कुछ को नहीं होता है ना, तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, एंड इन सब चीजों पे फाइट नहीं करना, है ना. मैम एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड दिखा देंगे प्लीज. इसके बाद वाली मैम, अभी जो मैम कैलकुलेट किया था ना डेल ई बाय डेल सी. यस मैम, इसके पहले वाली डेल ओवर डेल सी. यस मैम, दिस वन. यस, ओके, थैंक यू मैम. एक सेकंड. Okay. So let's finish this class. Thank you, ma'am. Okay. So let's